Hello, students. After a very long time, I'm restarting the sessions. So, today we are going to start with the indefinite integration parts or indefinite integration. Right now, I'm not going with the problems. I'm just going with the theorems and proof because these are the important parts. So, theorems, standard forms and उसके proofs कैसे करने हैं इसके बारे में हम discussion करेंगे. I'll be taking few series of classes for this. We will be starting today with the very basic part, that is definition क्या है और कुछ basic rules क्या है and standard forms क्या है, उसके proof वो standard forms, because इसके standard forms के बाद हम कुछ questions and types of questions हम लोग देखेंगे. I'll also be taking one class comparing the standard forms of derivatives as well as the integration, because the most confusing part when we start with the integration is हमने अभी तक derivatives करके रखा है, तो अब integration immediately जब हम start करते हैं so we get confused. तो reverse process सब होता है इसलिए. So let's begin today. Now let me share the screen first. Okay. I hope the screen is visible. Okay. Now, to begin with, a very simple thing, definition. What is the definition of integration? Definition of integration says that it is the inverse process of derivatives. इसका अपना कोई definition हमने नहीं लिया है. It is the inverse या फिर reverse process of derivatives या differentiation. So if it says if a derivative of, suppose let's say g of x is equal to f of x है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर्स में सीखा था, डेरिवेटिव ऑफ g of x is f of x, then integration of f of x dx is equal to g of x plus c. Now what is c? C is something new that we are introducing, that is called as integration constant or constant of integration. क्यों है, कैसे है, लेट अस डिस्कस. वो भी मैं समझा देता हूँ आपको कि ये पहले तो डेफिनेशन समझ लो. इट इज ऑल्सो, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. नाउ दिस इज ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव. ये भी एक वर्ड याद रखना, इंटीग्रेशन के लिए एक वर्ड है प्रिमिटिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव. इंटीग्रेशन के लिए दूसरा वर्ड है, बिकॉज समटाइम्स यू नो इन द एग्जाम दे आस्क यू टू फाइंड आउट द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. Okay, so integration is anti-derivative. So here I can say either it is primitive या फिर it is anti-derivative, या फिर indefinite integral. इसको हम indefinite integral कहते हैं. The chapter name is indefinite integration. So indefinite क्यों है, क्या है, और फिर definite क्या है, that is the next chapter. Okay, now let's see ये C कहाँ से आया. So I'll give you a very simple example, because with the help of definition we'll go. Suppose let's say derivative of x square plus 4x अगर मैं बोलूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x plus 4, right? And hence as per the definition, इसका अगर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव 2x plus 4 है, तो 2x plus 4 का जो इंटीग्रेशन है ये मेरे हिसाब से होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ let me take another derivative. I'll take derivative of x square plus 4x plus 5. Now what is the derivative of x square plus 4x plus 5? x square का डेरिवेटिव फिर से 2x है, 4x का डेरिवेटिव फिर से 4 है, and 5 as it is a constant, the derivative is 0. Now here as per the definition, if I go now according to the definition,
if the derivative of x square plus 4x plus 5 is 2x plus 4, then 2x plus 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x square plus 4x plus 5. कैन यू सी, दोनों हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों 2x plus 4 का है, but the answers are different. Let me take one more example, the last example. If I take derivative of x square plus 4x minus 7. Now what is the derivative of x square plus 4x minus 7? That is equal to 2x plus 4. Now again, as per the definition of integration, 2x plus 4 का integration क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2x plus 4 का integration according to the definition, it will be x square plus 4x minus 7. Okay, now every time the part of x square plus 4x is constant, वो तो fix है, क्या change होते जा रहा है, constant. Okay, now that means for every problem there is a possibility that there must be some constant, hence वो अपने को मालूम नहीं है indefinite integration में, definite में वो पता चल जाएगा कैसे होता है, but indefinite integration में अपने को मालूम नहीं है, hence what we do is we just write down a constant c which is called as constant of integration. All right, now ये होने के बाद कुछ बेसिक रूल्स हमको समझ के लेना है जो हमने डेरिवेटिव्स में भी लिख के लिए थे. सो द फर्स्ट रूल इज, आई विल राइट बोथ द रूल्स एट द सेम टाइम. एफ ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन साथ में आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो जस्ट लाइक वी वर डूइंग इन डेरिवेटिव्स, वी सेपरेट देम, एफ ऑफ एक्स dx. Either it will be plus or minus integration of g of x dx. All right. Similarly, derivatives में हम लोग करते थे k into f of x. k into f of x dx will be equal to k, constant को बाहर निकालेंगे, f of x dx, just like we were doing in derivatives. What about constant term का इंटीग्रेशन, थोड़ी देर में बात करते हैं जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने वाले हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स. ओके, लेट्स गो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स. अगर इसका भी प्रूफ हमको करना है, इसका प्रूफ अभी तक पूछा नहीं है, आई चेक, अगर नहीं है तो इसके करने की जरूरत नहीं है. लेट्स गो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक टेबल मैं बाद में देने वाला हूँ टुवर्ड्स द एंड, बट एट द सेम टाइम वो एक स्पेशल क्लास, दो क्लासेस अलग से होगी, एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म्स होगा और पूरा टेबल बनाएंगे, और एक टेबल ऐसे बनाएंगे जहां पे डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन सब कुछ आएगा. ऑलराइट, सो राइट नाउ फर्स्ट वन. ओके, नाउ लेट्स से द फंक्शन इज x raised to n. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x raised to n? The derivative of x raised to n, as we know, it is nx raised to n minus 1. That is the standard form. Now, for a change, what I'm doing is, first thing, I'm taking the derivative of x raised to n plus 1, not n plus 1. Okay, now if I take the derivative of this, it will be n plus 1 x raised to, अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से चले तो it will be n plus 1 minus 1. Hence, I have derivative of x raised to n plus 1 will be equal to n plus 1 x raised to n. यहाँ तक समझ में आ गई बात, because 1 and minus 1 will get cancelled. Now, that means by definition, primitive या इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ n plus 1 x raised to n will be equal to x raised to n plus 1 plus c. Now, n plus 1 is a constant over here. As we discussed on the previous page, यहाँ पे अगर constant term है तो उसको बाजू में रखते हैं, x raised to n dx, that will be equal to x raised to n plus 1 plus c. And hence, we have the first, पहला वाला अगर देखा जाए तो x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c.
right? Do not worry about sir c के divide भी n+1 होगा, yes होगा, but that will remain as constant term, hence हमने उधर ही constant term डाल दिया है. Now इसको लेके अगर कुछ और प्रूफ हमको करने हैं तो कैसे होगा? So the first standard form is integration of x raised to n is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Now I always say अगर आप problems का practice कर रहे हैं तो always the easiest way to remember any formula is to repeat the formula during the problem solving. So at least in the problem solving part आप repeat करते रहिए. Now the second one is the best thing is sir what is the integration of k या फिर what is the integration of 1. ओके ये निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट मी टेक द डेरिवेटिव ऑफ x. What is the derivative of x? Derivative of x is 1, right? So by definition अगर derivative of x 1 है तो what will be the definition? By definition integration of 1 dx is always equal to x plus c. This is the second one. Let's move on to the third one. Okay, let me take the derivative of root x. What is the derivative of root x? Root x का derivative है 1/2 root x. Okay, naturally जाहिर सी बात है, if I take the derivative of 2 root x, or rather if I cross multiply this, then derivative of 2 root x will be equal to 1/root x. Hence by definition once again अगर definition के हिसाब से जाए, integration of 1/root x is always equal to 2 root x plus c. Let me move on to the fourth one. So we have done first one is x raised to n ka integration x raised to n plus 1 divided by n plus 1. The second one, for integration of 1, it is always equal to x. For integration of 1/root x, it is equal to 2 root x plus c. The third one, now derivative of 1/x. What is derivative of 1/x? Derivative of 1/x is minus 1/x square. राइट, डू नॉट वरी अगर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये अगर आप भूल रहे हो, यू कैन ऑलवेज गो बाय द बेसिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ x रेज टू n. तो अगर 1/x का डेरिवेटिव -1/x है, then that means derivative of -1/x will be equal to +1/x square. Hence again according to the definition integration of 1/x square dx is equal to -1/x plus c. Right, now very interesting part, number 5. What is derivative of log x? Derivative of log x is 1/x. That means अगर मुझे कोई पूछ रहा है डिफरेंशिएशन 1/x का, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑलवेज इज log of x plus c. Why? Because log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x. Hence अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log x हो गया. राइट, डू नॉट वरी अबाउट 3, 4 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसका कुछ भी चेंजेस हो गया, डू नॉट वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, नाउ द सिक्स्थ वन, लेट मी टेक इट ऑन द न्यू पेज. सिक्स्थ वन. ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x? a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a रेज टू x log a. Right, that means if I am taking the derivative of a raised to x upon log a, it will be equal to a raised to x, and hence integration of a raised to x dx
is always equal to a raised to x upon log a plus c, right? Now, with the help of this, what is the next one? Of course, is derivative of e raised to x. अगर e raised to x का डेरिवेटिव देखोगे, दिस इज द सिंपलेस्ट वन. यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है बिटवीन द डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, बिकॉज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x. Hence, by definition, e raised to x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस इज e raised to x plus c, right? This is the integration of e raised to x. Now, the another important and interesting part, trigonometry. Trigonometry में आते हैं थोड़ा. Okay, we all know that यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों का इनिशियली. इन केस इफ द प्रैक्टिस इज न्यू प्रैक्टिस, यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी अभी स्टार्ट की है प्रैक्टिस, तो यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस. बार बार करते रहो, अपने आप डिफरेंस सेपरेशन आपको पता चल जाएगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? Derivative of sin x is always cos x. So according to definition, integration of cos x क्या हो जाएगा? cos x का integration हो जाएगा, cos x का integration is equal to sin x plus c. So here basically the confusion starts because आदत है अपने को derivatives करने की, and derivative of cos x क्या होता है? minus sin x होता है, which we shall be discussing in the next part now. Number 9. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है? साइन एक्स है, राइट? इट इज प्लस साइन एक्स. देन लेट मी डिस्कस दिस नाउ. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? Derivatives of cos x is equal to minus sin x. Okay, now that means derivative of, अगर मैं माइनस कॉस एक्स ले रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स. एंड हेंस एज पर द डेफिनेशन, अगर माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस से. दिस आर द टू प्लेसेस बेसिकली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का, बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव्स पार्ट. सो बी केयरफुल. यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन है sin x एंड sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x. ऑलराइट, नाउ नंबर 10. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, अभी खत्म नहीं हुआ. डेरिवेटिव ऑफ tan x. डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec square x. ऑलराइट, दैट मीन्स integration of sec square x is equal to tan x plus c. 11th part, derivative of cot x is minus cosec square x. All right, which means derivative of minus cot x is equal to plus cosec square x, and hence integration of cosec square x is always equal to minus cot x plus c. Now remember this two. Once again, the important and interesting part is, मैंने अभी तक tan x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा, मैंने अभी तक cot x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा है. दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. हम लोग टाइप 2 या सेकेंड एक्सरसाइज के टाइम ये सीखते हैं. सो राइट नाउ इट इज ओनली sec square x and cosec square x. ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now, what is the derivative of sec x? If I take the derivative of sec x, it is equal to sec x tan x. All right. So naturally, according to the definition,
sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू sec x प्लस सी. ऑल राइट, रिमेंबर sec x का इंटीग्रेशन के बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, राइट? That will be in the later part, not in this class. In the next class it will happen. Now 13th one, derivative of cosec x. What is the derivative of cosec x? It is minus cosec x cot x. Okay, naturally derivative of, if I am taking minus cosec x, then it will be equal to plus cosec x cot x. And hence, as per the definition, integration of cosec x cot x dx will be equal to minus cosec x plus c. All right. Now, so अगर पेयर की बात करें तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला वाला किया, द इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x. I repeat, the integration of sin x is minus cos x. Integration of cos x is sin x. Integration of sec square x is tan x. Integration of cosec square x is cot x, sorry, minus cot x. Then integration of sec x tan x is sec x plus c, and integration of cosec x cot x is minus cosec x plus c. Now, integration of standard जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन थे उसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिपीट, sec x tan x cosec x cot x, इसके इंटीग्रेशन अभी मैंने डिस्कस नहीं किए हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ trigonometric functions. Now remember that derivative of sine inverse x. What is the derivative of sine inverse x? That is 1 upon root of 1 minus x square. Okay. Ab derivative of, if I take cos inverse x, derivative of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square. सो नेचुरली अगर ये माइनस साइन मैं यहां से निकालता हूं तो कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 minus x square. Hence, according to the definition, this will be 1 upon root of 1 minus x square dx will be equal to either sin inverse x प्लस सी लिखेंगे या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये प्लस सी. कब कौन सा लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कौन सा लिखना है ये डिसाइड अपने को करना है, राइट? बट रिमेंबर, गिवन अ चॉइस हम लोग यूजुअली साइन इनवर्स एक्स ही लिखेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू 15th one. Okay, let's come to 15th one. Derivative of, सबसे easy, tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x की बात करता हूं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये राइट हैंड साइड वाला जो माइनस साइन है ये उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका मतलब एज पर द डेफिनेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
integration is either tan inverse x plus c, or it will be minus cot inverse x plus c. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कौन सा यूज करना है हम डिसाइड करते हैं, बट गिवन ए चॉइस, कुछ उसमें कंडीशंस है नहीं, देन वी विल बी यूजिंग tan इनवर्स x. ना 15th के बाद आएगा 16th. What is derivative of sec inverse x? Derivatives of sec inverse x is 1 upon x into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, और अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ बात कर रहा हूं कोसेक इनवर्स एक्स की, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ इट मीन्स अगर मैं माइनस साइन यहां से उठाता हूं और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. हेंस एज पर द डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx is always equal to either sec inverse x plus c, or it will be minus cosec inverse x plus c. Again the same thing, depending upon the situation we will decide कौन सा यूज करना है. Alright, so the first one that we discussed in inverse is 1 upon root of 1 minus x square. That is equal to either it is sin inverse x plus c or it is minus cos inverse x plus c. देन हमने ये सेकेंड डिस्कस किया. सेकेंड में क्या बोला था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर इट विल बी tan इनवर्स x प्लस सी और माइनस cot इनवर्स x प्लस सी. ओके, नाउ द लास्ट वन जो हमने डिस्कस किया था. नाउ these are all the definitions that we have done till date, okay, based on the definition of basic derivatives. Okay, इसके आगे और भी चलने वाला है किस्सा, इसके आगे और भी standard forms, then there are certain proofs. So in the next class first I'll revise this and then we will go to the मेन इंपॉर्टेंट थियरम. अगर आप देखोगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक थियरम कम से कम या फिर इंटीग्रेशन पार्ट से एक थियरम आता ही है एग्जाम में, बोर्ड्स की बात करें तो. राइट, सो जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट, ये आप जो कर रहे हैं इसको नोटबुक और पेन लेके ही आपको करना है. राइट इट डाउन इन एवरीथिंग इन योर नोटबुक प्रॉपरली. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू हियर completely for integration, right? So I'll be taking formulas, theorems, उसके proofs, उसके tables तैयार करेंगे जो आप print करके आप रख सकते हैं अपने पास, and फिर comparison with derivatives कैसे होगा, and apart from that type of problems, और each type में एक एक problem at least मैं solve करूँगा. That's it for today. See you soon. Very soon I'll be meeting you again with the next part of this series. Thank you.